Hello students, this is Anamika here from St. Xavier Senior Secondary School and this is computer class. Class 5, chapter number 3, Windows and its application. And see, today we will cover some topics which are operating system, function of operating system and Windows, and rest of two topic we will cover by our next video. Okay, so let's start. A computer work when both hardware and software work together. The software control the overall activities of the computer to function properly. The most important software required is the operating system software. And see, the operating system software is the most important program installed on a computer. Without it a computer cannot work. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, बिकॉज जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बैकग्राउंड में वर्क करता है, ये सारी फाइल्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है. ठीक है, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर. It provides us a platform to work with application software. When we start the computer, जैसे हम start करते हैं कंप्यूटर को, the first software that get loaded, पहला सॉफ्टवेयर जो लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है. ठीक है, जैसे बूटिंग वगैरह होती है. ठीक है, तो आफ्टर देन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को. ठीक है, ऑन द कंप्यूटर इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द हार्डवेयर एंड इट्स यूजर. आफ्टर देन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल ऑल द स्टोरेज ऑपरेशंस. इट चेक हाउ द डेटा और फाइल विल बी स्टोर इन टू द कंप्यूटर. Operating system provide efficient and fair sharing of resources among user and program. It provides user a convenient interface to the computer system. After then Windows 7 is the most popular window in today's time, and Microsoft created the Windows operating system in the mid 1980s. See, I just want to let you know that Windows operating system, there are lots of example of operating system which are Windows DOS, which is called as this operating system, Ubuntu, and Mac OS, and iMac, and Windows XP. Okay, and see, Windows come pre-uploaded on the most of कंप्यूटर. प्री लोडेड का मतलब क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को खरीदते परचेस करते तो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. ठीक है, एंड विच हेल्प टू मेक इट द मोस्ट पॉपुलर operating system in the world. Some of the important feature of Windows operating system are like it is very user friendly. बहुत ही user friendly है, we can access is very easily. Also it provide an easy and uniform way to start program. We can do much work at the same time. As it support multitasking. जो Windows होता है वो multitasking सपोर्ट करता है. मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, हम एक समय पे कई सारा वर्क कर सकते हैं. जैसे इसको टैब से या मिनिमाइज कर देते हैं एक विंडो को, फिर दूसरी विंडो पे वर्क कर सकते हैं, फिर तीसरी अल्टरनेटली, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस पर सेम टाइम वर्क कर सकते हैं. ठीक है, इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू ब्राउज द इंटरनेट एंड यूज़ मल्टी मीडिया प्रोग्राम. ये इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है. आई मीन मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, वी कैन वॉच वीडियोस, वी कैन लिसन म्यूजिक ऑल्सो. एंड यू नो व्हाट, बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन. ठीक है, आफ्टर देन एग्जाम्पल ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम. There are lots of example of operating system. As I told you that Windows XP, Windows 7, Ubuntu और ये iMac. Okay, after then that was just a operating system of computer, and these are operating system for the mobile device. ठीक है, mobile device operating system. These operating system are designed for a variety of devices such as handheld computers, sub notebook, PCs, mobile phone and many more. First is iOS. Apple released the first version of iOS. जो Apple के सेट्स होते हैं
तो वो iOS रिलीज़ किए हैं टुगेदर विद देयर फर्स्ट आईफोन इन 2007. आफ्टर देन Android OS. It started as a project in October 2003 and was financially backed up by Google. After then, BlackBerry. It was launched in January 1999 with the release of version 1.04 pager. BlackBerry 580. After then, Windows Mobile 7. Windows Mobile 7 is based on Microsoft Windows 32-bit. ठीक है. Windows Mobile work on some devices including Pocket PC in smartphone and communicator. After then, Vada OS. Vada is a mobile operating system designed for smartphone and tablet. After then, Symbian. Symbian platform is based on memory economy and high performance speed. After then, various programs of Windows 7. Windows 7 provide various programs as part of its operating system. These programs can be used easily. Let's see what are that. So the first is Notepad. This is simple text editing program that allows us to type and create different document with limited formatting. लिमिटेड फॉर्मेटिंग क्या होता है इसमें, जैसे कि हम लिमिटेड वर्क ही कर सकते हैं, सिर्फ टैक्स रिलेटेड वर्क कर सकते हैं. और नोट पैड में ऑल्सो वी कैन डिज़ाइन द वेब पेजेस. ओके, एंड we can't do the formatting like we inserting page border, page color. We can't do it on notepad. That is why it is simple text editing program. After then, wordpad is a simple text editing program. It helps to create documents such as letter, memo, reports, list and so on. ये थोड़ा सा नोटपैड की कंपेयर एडवांस है. ठीक है, इसमें हम डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और थोड़ी सी एडिटिंग भी कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो मेक करेक्शन इन द टेक्स्ट विच टाइपिंग एंड ऑल्सो आफ्टर टाइपिंग. इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हो, कुछ भी टाइपिंग कर रहे हो, अगर उसमें एरर है तो वहाँ पे रेड वेवी लाइन आ सकती है, आ जाती है. ठीक है, तो उस पर माउस पॉइंटर ले जाके राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड लॉट्स ऑफ keyword will display. ठीक है, और if you want to correct your spelling you can choose the correct spelling from there. After then, we can make our document attractive by using different colors, styles and effect. Wordpad has been discussed in detail in previous classes, as I told you also. After then, MS Paint is a simple graphic program to draw picture on the screen and paint them with different color. We can insert lots of shapes also on it. The use of MS Paint has been discussed detail in okay, ये भी previous classes में. After then, calculator. You all have seen the calculator on your mobile phone also. The calculator is an application that allow you to perform basic to complex calculation. ठीक है, and let's see how to start calculator. Click on start button. When you will click on start button, a list bar will display. After then, click on all programs, then click on accessories. After then, calculator. When we click on calculator option, calculator will appear on a monitor screen. After then, games. See, games that are available with Windows are chess, free cell, hearts, minesweeper, solitaire, spider, solitaire. After then, purple place, major, titans, internet checker, etc. And how to start game, click on start button. After then, program. After then, games option. Then choose the game whatever you want to play. Okay, and rest of topic I will let you know. Yes, you can see on the screen. Rest of topic I will let you know on our next video. If you have any query or comment, you can drop that in the comment box. Nothing, you can ask that on the WhatsApp group. Okay, thank you.